So we have a class which will extend the web security configure adapter. In that it will have two configure functions, one with the authentication builder and one with the HTTP security. HTTP security will do the routing part. This endpoint can be accessed by this role, this endpoint can be accessed by this role. That is not our concern right now. So now our main concern is, if I give the user, so here I have written over here, see, Alice, and if I give the password as Alice123, correct? So I know in the database it is not Alice123. In the database it is in encrypted format, correct? So I need some mechanism to convert this Alice123 to the $12 ना, क्या है $2 है, सॉरी क्या है $2 blah 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 जो भी encoded format में है. I need this and I want to authenticate, does Alice exist in my database or not. So I should have a record by the name Alice and this $2, right? So and the repository contains the database, that we know. So who will do that for me now? So I have in the authentication manager I have a function. Okay, which function? Configure. So I go to that function which has authentication manager builder. In that authentication manager builder has a object called as auth. This auth objects now needs to verify the user also and the password also. So for that I have a function called as authentication provider. This is an inbuilt function of whom auth, and it requires the user details and the encrypted password. So it requires this. So I call this function internally. So this function is being called over here. And now what sort of authentication am I using? Database. So I will make an object of which with authentication DAO. Then to set the, for the user detail I will call what, and for the password I will call what, and these are methods over here. So it needs the object of whom, a class which is implementing the user detail service. So any implementation of whom, and any implementation of whom. So now I make over here and just written a plain object, written a plain object of any class. So I made a class by the name user detail service IMPL. I made a class by the name what, service. Okay, so you can call this as, this is the class. Okay, this is the user detail. So you can call this as user detail service IMPL. Okay, this is your user detail service IMPL. So this is the class. User detail service. Okay, so this is the class user detail service IMPL. So any class which is implementing whom, the user detail service. So we have to make a class in our application which will implement the user detail service. Inbuilt class, inbuilt interface. So encoder ऑथेंटिक प्रोवाइडर क्या होता है, मुझे इन दो के ऑब्जेक्ट्स चाहिए, तो अपन ने यहाँ उनके ऑब्जेक्ट्स रिटर्न कर दिए प्लेन. ठीक है, तो अभी अपन ने, तो फिर वो क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट से उनकी फंक्शन को कॉल करेगा. तो अभी अपन ने क्लास बना दी है जो किसको कर रही है इम्प्लीमेंट, तो ये रहा. ठीक है, IMPL. और फिर वो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट से किसको कॉल करता है, फंक्शन को लोड यूजर बाय यूजर नेम, और उसको वो यूजर नेम पास कर देता, वो इंटरनली पास करता. जो अपन ने स्प्रिंग सिक्योरिटी का डिफॉल्ट लॉगिन पेज खोले ना, वहां से भेज देता डायरेक्ट. तो वहां से वो जो टेक्स्ट बॉक्स में स्प्रिंग आई है ना, वो डायरेक्ट यहाँ पास कर देता.
और फिर अपन डेटाबेस से वो यूज़र ला के दे रहे हैं उसको, है तो ला के दे रहे हैं, नहीं है तो बोल देते नहीं है। और जब अपन उसको ला के दे रहे हैं ना यूज़र को, तो अपन इसको ऐसे नहीं ला के दे रहे कि विराट $2AA ID1, उसको पूरा उसके अथॉरिटीज़ के साथ एक्टिवेशन करके दे रहे हो, उसको पूरा सजा के दे रहे हो उसको। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन जो यूज़र लेके आए ना, अपन उसको किसको पास कर रहे हैं फिर सजाने के लिए, तो उधर आ गया माई यूज़र डिटेल्स। तो वो अपना ऑब्जेक्ट ले रहा, अपने ये अपन उसका क्या कॉल किया, अपन उसका वी हैव कॉल द कंस्ट्रक्टर नो। जब आप न्यू कॉल करते किसको कॉल करते हैं आप, कंस्ट्रक्टर में। तो वो क्या कर रहा है, उसके कंस्ट्रक्टर में जा रहा है और अपना यूजर को वहां डाल दे रहा है, और वो अपन लोकली अपने क्लास में ले ले रहे। अपना यूजर आ गया, अब अपन जाके उसके अथॉरिटीज फेच कर रहे हैं डेटाबेस में जाके, पूरा मैंने अपने सेट कर दिया ना, सारे अथॉरिटीज लेके आ गए, अथॉरिटीज को पॉपुलेट कर दिए और रिटर्न कर दिए। तो ये उसको अथॉरिटीज मिल गई, और फिर जितने उसके आईडी पासवर्ड है वो सब, और जितने उसके बाकी मेथड्स एक्टिव है ये सब है, तो वो उस फॉर्मेट में रिटर्न करता। जब अपन उसको बोलते हैं ना कि मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, कि ऑब्जेक्ट है क्या नहीं, तो वैसे नहीं बोलता कि ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ले लो $1 विराट, और वो अपने को वो विराट है भी और पूरे के पैकेज के साथ देता हमको। तो वहाँ उसको ये मिल गया अभी। तो अभी यहाँ पर उसको पूरा का पूरा जब मिल जाता है ये, तो वो ऑथेंटिकेट कर देता हूँ, और ये बाकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये मैनेज कर लेता हूँ।